So hi everyone, welcome to Talentele Learning. So today we are going to learn VBA, Visual Basic for Applications. So ये VBA tutorials हम लोग from the very beginning और scratch से चालू होने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको explain करूँगा VBA का real use क्या होता है, ओके क्यों हमें चाहिए VBA और VBA के लिए जो prerequisite है क्या चाहिए prerequisite as part of VBA programming. ओके so let's understand ये VBA क्या होता है. ओके so why VBA is used. See, VBA stands for Visual Basic for Applications, which is a Microsoft's programming language. And ये language आप use करके you can automate MS Office tools like Excel, Word and Access. ये सारे जो MS Office के applications है you can automate it. So आपको क्यों automate करना है? You can automate tasks like formatting, calculations and data entry, but आपको क्यों automate करना है? See, अगर आपको लग रहा है कि कुछ repetitive and monotonous task है जिसको आप automate कर सकते हो, which will take less time and less effort, and ये daily basis पे आप लोग कर रहे हो, so obviously on a regular basis if you are performing this task it is very hectic, and ये अगर automate कर दोगे आप you can complete that task in fraction of seconds. Okay, this task can be completed in fraction of seconds. So आप खुद के functions बना सकते हो, जैसे बहुत सारे functions है, sum हो गया, min हो गया, max हो गया, left right. जैसे excel में बहुत सारे built-in functions है, जैसे कि let's say text functions है, left functions, I mean numeric functions है, date functions है. Okay, so these are called built-in functions. आप खुद के custom defined functions बना सकते हो, which is your own functions. You can create it by using VBA programming language. Okay, VBA helps build macros to save time on repetitive tasks. The same thing I have explained. अब macros मतलब it is same VBA. You can write a small piece of code to automate repetitive tasks. So event driven programming language हो गया, जैसे आप बटन पे क्लिक कर रहे हो, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करोगे, आप रेडियो बटन पे क्लिक कर दो, दैट इज कॉल्ड एक 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 एक्शन होता है, ठीक है. सो एक इवेंट परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. वो सब भी हैंडल. बटन क्लिक करने से क्या होगा, अगर मैं क्लियर बटन क्लिक करता हूँ तो सारे लेट्स से जितने सारे फील्ड्स होंगे उनके वैल्यूज क्लियर हो जाएगा, ठीक है. दैट कैन बी डन थ्रू VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यूजफुल फॉर क्रिएटेड I mean creating user defined और सॉरी यूजर फ्रेंडली फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. आप क्या कर सकते हो, आपका यूजर फ्रेंडली जो रिपोर्ट्स है, फॉर्म्स है, दैट यू कैन क्रिएट इट. ओके, ग्रेट फॉर इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड वर्कफ्लो इन एवरीडे टास्क. ऑब्वियसली आपको अगर लग रहा है कि डेली बेसिस पे आप कुछ टास्क मैनुअली कर रहे हो जो कि एक्चुअली बहुत टीडियस है, हेक्टिक है, दैट कैन ऑल्सो बी ऑटोमेटेड थ्रू VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई देन. हम लोग ये करेंगे, क्यों ऑटोमेट करना है हमें. ओके, सो why can't we do the same thing in Excel. Excel में क्यों पॉसिबल नहीं है, हम लोग को VBA एडवांस लेट्स से प्रोग्रामिंग ये सब सीखने की क्या जरूरत है. इन द नेक्स्ट सेशन आई वांट टू एक्सप्लेन दैट. ओके, तो एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे, डोंट वरी. फ्रॉम बेसिक टू एडवांस वी आर गोइंग टू कवर. ओके, so thank you for watching this video. If you like this video, subscribe, comment and like.